Strange Meeting is an anti-war poem. It's a poem written during the First World War. The poem talks about the adverse effect of war on human life. So the poem begins where the narrator is in the beginning unable to understand where he is. So it seems out of battle I have escaped. So narrator was a soldier. So he says, it seems that I have come out of the battle. Somehow battle ho raha tha and he escaped from there. So the first line means that narrator was in the battlefield and he escaped from the battlefield somehow. So where did he go? Down some profound tunnel. The speaker, the narrator of the poem, is saying that I have escaped from the war. So where did he go? Escaping from the war, he went inside the earth. There's a tunnel, very profound, very big tunnel. So narrator in the beginning of the poem says that he escaped from the war and he has gone inside the tunnel, long since scooped the granite through granites which Titanic war had groined when it created. So this this tunnel has been scooped, ice cream wala scooped, through granite walls, which the Titanic war, these big warmongers have created. So ये जो tunnel है, ये tunnel जो है warmongers लोग बनाए हैं, made of granite walls. So the first three line means that के narrator of the poem जो है ये war से बच के एक tunnel में है, और ये tunnel जो है granite से बने हुए हैं, जो बहुत बड़े वॉर मॉन्गर्स लोग इसको ग्रोइन किए बनाए. So the very first few line means that the narrator has escaped to the war and he has gone into the tunnel. The tunnel is made of granite and it is created by war mongers. Groin means created. Yet there, when he entered into the tunnel, he found there were lots of sleepers. In compartment, matlab helpless, all groaning. When he entered into the tunnel, he found many sleepers. Okay, they were all crying out of pain and they were in compartments. They were half life. Narrator जब वो टनल के अंदर जाता है तो देखता है आधे लोग lifeless, too fast in thought or dead to be steered. So they are so lost in thought, of as if nothing can bestir them, nothing can shake them. So these people who are sleeping as if they are dead or they are lost in some trance. They are in some kind of different world. So these sleepers are groaning, crying out of pain. They're in compartment, they're helpless. और ये sleeper helpless लोग जो है ऐसा लग रहा है कि वो मरे हुए हैं, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, and nothing can bestir them, nothing can make them provoked and life full of life again. Then when narrator probed मतलब when जब थोड़ा छानबीन किया, when one sprang up, see sleeper who were groaning, who were incompartment, who were lifeless, who were lost in thought or trance. So when narrator kept on searching कि इसमें कोई है, कोई मतलब उठ सकता है, कोई जिंदा है, so he realized of so many sleepers incompartment, groaning, crying out of pain. एक अचानक कोई खड़ा हुआ, sprang up, got up, and stared at the narrator with a piteous recognition. So when the other person looked at the narrator, he was looking at him as if he could recognize him. He could उसको पहचान पा रहा था, and it was piteous, when it was full of pity. Narrator टनल में है, टनल में बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांस में है, डेथ में है. अचानक से एक आदमी खड़ा होता है और वो नरेटर को देखता है, स्टेयर्ड बट लुक्ड एट नरेटर विद पिटियस ग्लांस, मतलब दया वाला आंखों से देखता है, फिक्स्ड आइज, तो ध्यान से देखता है. लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड, अपने हाथों को ऐसे करता है, एज इफ टू ब्लेस, में वो ऐसे करता है एज इफ टू ब्लेस. By his smile, I knew that was sullen hell. Sullen means dark, somber, dull. So narrator समझ गया कि उसके हंसी से कि ये जरूर hell है. मतलब according to the narrator, war is such a place that you can't smile. So probably after death only, when you go to hell, probably you can smile. The irony is, it is hell, but people are smiling. I knew I too stood in hell. So now narrator explains that he is also in hell.
So ये टनल एक्चुअली टनल नहीं, ये हेल है, और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब डेड पर्सन है. So they have come to the afterlife. So when narrator searched everybody, then one man got up and he was putting his hand as if he was there to bless the narrator. And he smiled, so narrator understood कि ऐसा मुस्कान, ऐसा हंसी सिर्फ हेल में ही हो सकता है. With a thousand fear that vision face was drained, yet no blood reached therefrom. So ये विजन, ये लोग, इसके चेहरे पे हजारों डर थे. मतलब ये मरने के बाद हेल में आ चुका है, अभी भी इसके चेहरे पे डर है. जबकि इस हेल में, वो टनल वाला हेल में, देयर इज नो ब्लड. माने वॉर का ब्लड शेड तो यहाँ नहीं रहा. देयर इज नो गन, गोला बारूद का आवाज नहीं हो रहा है. कोई फ्लूज, मतलब वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वॉर में बजता है, वो नहीं हो रहा है. तो ये डर किस बात से रहा है? सो नरेटर इज सरप्राइज्ड दैट दिस अदर पर्सन, व्हाई हिज फेस हैज thousands fear on his face, though there is no bloodshed here, there is no musical instrument, there is no roaring of the gun. So narrator said, strange friend. Now this is again a kind of oxymoron. How can friend be strange? You can only be a friend with people who are acquainted. So he's saying strange friend. इसीलिए इसका नाम है strange meeting. It is a strange meeting. It is a strange meeting because they are meeting in hell. It is a strange meeting because the environment is very surreal, very abnormal, weird, अजीब और गरीब. और ये स्ट्रेंज है बिकॉज ये दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे. दे हैव किल्ड वन अनदर, नाउ दे हैव बिकम फ्रेंड. दिस इज स्ट्रेंज फॉर थ्री रीजंस. वन, दैट दे हैव enemy is no more enemy, it's friend, and there is no grudge. जगह अजीब और गरीब है और वो हेल में मिल रहा है. So he's saying, strange friend, I said, there is no cause to mourn. He says, यहाँ तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ कोई ब्लडशेड तो नहीं हो रहा है, यहाँ कोई गन्स का थंपिंग का गोली बारूद तो नहीं चल रहा है, यहाँ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉर जो में बजता है वो तो नहीं बज रहा है. None said the other, save the undone years. He's saying, हाँ यहाँ तो कोई ब्लडशेड नहीं है, यहाँ कोई पेन, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ एक है, पेन है. क्या? The undone years, the years which is lost in the battlefield, or the war which would have been spent in living a beautiful life. So वो दिन चले गए और अब सिर्फ होपलेसनेस रह गया. So he's saying कि मेरा भी होप ऐसा ही था जो तुम्हारा था. मतलब तुम जर्मन हो और हम इंग्लिश हो, तुम जर्मन. इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन क्या है, hope is similar to all human beings. He's saying your life was similar to mine. The basic core concept of human emotions are same, irrespective of which country we belong to. I went hunting after the wildest beauty in the world, not that lies in the eyes of the braided hair. He's saying मैं भी वो beauty which is truth, सच्चाई के खोज में निकला था जैसे तुम निकले थे. और the wildest beauty, सबसे अच्छा beauty, the absolute beauty, the eternal beauty, the eternal truth, वो जो आंखों में नहीं मिलता, वो जो बालों में नहीं मिलते, but that mocks the steady running of hour. ये वो खूबसूरती है, ये वो सच है जो वक्त के बीतने से भी नहीं बीतता, वक्त के बदलने से भी नहीं बदलता. So this is a wildest beauty that is in the form of truth, that is Sat Chit Anand kind of thing. So he is searching for that kind of beauty that lies not in the eyes, because eyes can fade away with death. The hair can go off with age. He is searching for a beauty जो वक्त को भी मजाक उड़ाता है. कैसे? That time is running very fast, but this eternal beauty in the form of truth does not shake, does not change. So he is searching for a beauty जिसका वक्त भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. But if it grieves, it मतलब वो beauty, वो truth, वो eternity का वो, if it grieves richer than here. He's saying कि अगर उसको दुख भी होता है ना, तो वो बहुत एक्सट्रीम दुख है. वो दुख भी एब्सोल्यूट है. मतलब अगर वो ब्यूटी, वो खूबसूरती, वो एब्सोल्यूटनेस को अगर कोई फील कर पाए, अगर वो दुख भी करे तो बहुत एक्सट्रीम दुख होगा. अगर वो खुश भी करे, अगर मैं उस खूबसूरती की बात करूं जो इटर्नल है, so everybody would have laughed. Glee and happiness. The narrator is saying, if I would be happy in that, in search of that eternal beauty, and if I would be happy, everybody would be happy around. And if I would be weeping, even if I would be sad, it would leave something around. मतलब मैं दुख भी होता लाइफ में खोज करते करते, वॉर के अलावा कुछ, तो भी किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ दुख भरे नगमे मिलते, किसी को अरिजीत सिंह जैसा गाना मिलता,
So even if my weeping, something would be left behind. And if I had to be glee, people would have laughed. अगर मैं हंसता तो लोग हंसते, अगर मैं दुखी होता तो भी मैं कुछ छोड़ के जाता. Which must die now. He's saying कि अब तो मैं हेल में हूँ, तो अब ये खूबसूरती जो इटर्नल है, अब ये ग्रीफ विच इज मच डीपर ग्रीविंग सॉरो, अब ये ग्ली माने हैप्पीनेस विच कैन मेक एवरीबडी लाफ, अब ये वीपिंग विच कैन मेक एवरीबडी सैड, अब ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता. द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन डेथ इज नॉट डेथ. द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ डेथ इज दैट व्हाट डाइज विद इट. जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये नहीं है कि आप मर जाते हैं, तो सभी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे. The greatest tragedy is that beauty that you are searching, the eternal beauty that is not in the braided beautiful hair, that is not in the eyes, that beauty will die in him. The greatest tragedy in life is not death, it is what dies within. And this narrator now is in hell. इसके साथ इसका खोज, इसका ब्यूटी, तो कुछ इसके साथ मिट गया. I mean the truth untold is this. अब मेरे साथ वो ट्रूथ मर गया, वो सच्चाई जो कभी कभी एक्सप्रेस कोई कर नहीं रहा है, तो कोई करता ही नहीं है. क्या? The pity of war and the war distilled is saying कि war कितना dangerous है, and we should have pity on the victims of war and the pity distilled. अगर इसको डिस्टिल करके देखेंगे तो देखेंगे war has so much multi-dimensional destruction. ये सच्चाई कहना बताना अधूरा रह गया. So narrator is saying कि अगर मैं खुश होता, अगर वॉर में ना होके कुछ और होता, तो मेरी खुशी भी सबको खुश कर देती. और अगर मैं दुखी भी होता तो वो दुख सबको दुखी कर देती. वो दुख भी इटर्नल होता, वो दुख भी नेचुरल होता. वो दुख इस मैन में डिस्ट्रक्टिव वॉर के अंदर नहीं. लेकिन वो सब ट्रूथ अनटोल्ड तो अब पोएट के साथ मिट, नरेटर के साथ मिट जाएगा. क्यों? बिकॉज नाउ इज इन हेल. एंड वो वॉर के लिए दया, द पिटी ऑफ वॉर डिस्टिल, मतलब धीरे धीरे वॉर के लिए एक एक आइडिया कि कैसे जैसे डिस्टिलेशन ऑफ वाटर होता है, लोगों को समझ में आता वॉर कितना डिस्ट्रक्टिव है. ये कहना सुनना बाकी रह गया. नाउ मेन विल गो कंटेंट, नाउ दे आर डेड. वॉर तो चल ही रहा है, बट नाउ दे आर इन द हेल. सो नाउ पोएट इज सेइंग, नरेटर इज सेइंग कि मेन विल कंटिन्यू टू फाइट. और since we have killed, we have defeated somebody, have killed millions of people, men will be content. The human being will be happy with what we have spoiled, what we have destroyed. So narrator is saying कि लोग हमसे खुश होंगे कि हमने बहुत बर्बादी किया. या अभी भी वो खुश नहीं होंगे, maybe they are discontent. So their blood will boil. वो गुस्सा में होंगे, they will spill bloods. मतलब कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, और हो सकता है with one's destruction, holocaust होते रहे. They will be swift with the swiftness of the tiger. ये जैसे टाइगर अटैक कर देता है, वैसे ये लोग भी एक दूसरे का खून निकालने के लिए, मारने और मिटने के लिए तैयार होंगे. None will break ranks. कोई अपना लेफ्ट राइट रैंक में वॉर का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा. Nobody will get away from the ranks. तो नेशन में ट्रैक माने गो अवे फ्रॉम प्रोग्रेस. हो सकता है ये सोल्जर्स लोग अपना आर्मी का रैंक बरकरार रखे, और इस रैंक बरकरार रखने के चक्कर में पूरा नेशन डिस्ट्रॉय हो जाए. So irony is, this line is ironical because though no soldiers are breaking rank, they are not getting away from the war, but nations are not moving towards progress. They are moving away from progress. The nation trek from progress, not towards progress. मतलब ये इतने सारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, लेकिन कामयाबी की तरफ नेशंस नहीं जा रहे, कामयाबी से परे हो जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं. Courage was mine. That is saying पहले मेरे पास courage था, wisdom भी था. Okay, so he's saying कि I miss the march of the retreating world into the veiled citadel that are not well. So narrator is saying कि अब दुनिया जो है retreat कर रहा है, आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है. कहाँ जा रहा है? So the world is now marching where? Marching, coming back, retreating back into the veiled citadel that are not well. So narrator is saying कि अभी दुनिया जहाँ वापस जा रहा है वो एक किला जैसा है, रेड फोर्ट जैसा है, और वो वेन है. मतलब लोगों का घमंड है कि मैंने किले जीते हैं, और ये यूजलेस है, ये वेन है, ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है, एम्प्टी है, हॉलो है, शैलो है. सो द वर्ल्ड इज नाउ रिट्रीटिंग, गोइंग इनटू अ citadel, a fortress which is empty, which is hollow, which is meaningless. And it is not world. It is not world because any time anything can happen. So narrator is saying I miss those march. मतलब I'm aware now from what? From those marching. दुनिया आगे मार्च कर रहा है. कहाँ?
एक किला में जा रहा है, फोर्ट में जा रहा है, वो ऐसा किला जहाँ कोई दिवाली नहीं है, जहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ कोई पीस नहीं है, जहाँ कोई लव नहीं है, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ कोई इटर्निटी नहीं है, जहाँ कोई सत्यचित आनंद नहीं है, जहाँ कोई हैप्पीनेस, इटर्नल पीस नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉन्ग वर्ल्ड, because there is no wall of happiness, joy, love, kindness. So narrator is saying the world is retreating. It's not progressing. It is coming back. Coming back where? Coming back into the veiled citadel, into a useless, hollow fortress, which is not protected from any side with love and affection and care. Now narrator is saying, though much blood has clogged the chariot wheel, तो वक्त के इस पहिए में ना करोड़ों लोगों का खून जो है पहिए में जम चुका. The narrator is saying that in the carriage of time, because of the war, blood had clogged, मतलब उस पहिए में ना खून चिपक गया, सूख गया. So the narrator is saying, अब हम जाएंगे, हम जाना चाहते हैं, and I would wash it with a sweet well, मतलब सच्चाई के पानी से उस खून को धोएंगे. Even the truth, he's saying कि अब वो मीठा वेल से, डिस्ट्रक्टिव वेल से नहीं, सच्चाई के वेल से, प्यार के वेल से, लीव एंड लेट लीव के वेल से, खुशी का, प्यार का पानी से ये सब खून को धो देंगे. Even with truth that lie too deep for them, he's saying I will even try to bring out the truth that is so deep in the heart that it cannot be tainted. It is such a spiritual truth that even that truth cannot be tainted. Tainted मैंने धब्बा लगे, काला दाग लगे. Narrator is saying कि हम ऐसा सच्चाई से चैरियट व्हील को धोएंगे कि चैरियट व्हील कभी गंदा नहीं होता. क्यों? क्योंकि इट विल बी वॉश्ड विद ऑनेस्टी, ट्रूथ. स्वीट वेल से ही धुलेगा, ट्रूथ से धुलेगा, और वो ऐसा ट्रूथ जो कभी भी डर्टी नहीं हो सकता. I would have poured my spirit without stint, मैंने without waiting. He's saying मैं पूरा अपना सोल जान लगा के जैसे भी हो इस वॉर को रोक देता, मतलब ये जो ब्लड क्लॉगिंग एटमॉस्फेयर है इसको एंड कर देता. But not through war, not through wounds, not through blood, not on the cess of war. Cess मतलब नाली का कट. So he's saying कि मैं गंदे वॉर के गंदे नाली का जैसा कुछ नहीं करता, मैं ब्लड शेड वूंड नहीं लाता, बट आउटपोर में स्पिरिट अपने सोल से, अपने लव से, अपने पोर ह्यूमिलिटी से, ह्यूमैनिटी से मैं आउट ऑफ पोर्ड माई स्पिरिट विदाउट वेटिंग, विदाउट स्टिंट मैंने वेटिंग, नॉट थ्रू वूंड्स, नॉट थ्रू द सेज मैंने डर्टी थिंग्स ऑफ वॉर. वॉर से ये कुछ नहीं रोकता, बिकॉज वॉर से वॉर को रोकेगा तो और होगा, वॉर तो प्यार से ही रोकेगा. An eye for an eye will make the whole world blind. So narrator is saying कि अगर वो जिंदा होता, given a chance, then he would go and wash the chariot wheel of the war. तो जैसे महाभारत में रथ होता था, उस रथ में जो खून, उनके पहिए में जो खून लगा, ये उनको अपने सच्चाई से, अपने अच्छाई से, अपने प्यार से धो देता. Out of poured my spirit without stint. Narrator is saying कि मैं अपना पूरा जान लगा देता, लेकिन वॉर को एंड करने का कोशिश करता. Not through wounds. Wounds मतलब घाव से नहीं, मारपीट से नहीं, not on the cess of war, वो गंदे नाली, वॉर के गंदे नाली से नहीं, अच्छाई से, लव से, केयर से, कंसर्न से. Before the men have bled, तो मतलब there are many people. The forerunners of men have bled where no wounds are there. So there are millions of poets, millions of victims of war. They are not bleeding physically, but they have felt the wounds. So forerunners of men have bled, though there is no wound. मतलब वॉर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि you see lots of people becoming a victim of war, not physically. For example, the wife in the house, the old parents in the house, their heads are not bleeding, वो तो war में गए नहीं है, but they have wounds. बिना खून के वो wounds. It's a psychological impact of millions of people being killed in the First and Second World War. Let us say for time being First World War. So narrator is saying, I know millions of people who have not been bleeding physically, but they have wounds. उनका wounds है, जो दिखते नहीं. So now, these two friends, and the two enemies who have become friends, or friend who are enemy, or enemy friend. Enemy friend is an oxymoron. So he's saying, I am the enemy, you killed my friend. See the arrangement of the word. जो friend है वो enemy है, जो enemy है वो friend है. He's saying, दोस्त, हम ही तुम्हारे दुश्मन थे, and मैंने ही तुमको मारा था. I am the enemy you killed, तुमने मुझे मारा था. I knew in the dark. He's saying कि वो war के darkness में whom you are killing you did not know. It's like in the darkness everybody is killing not knowing why they're killing. For so you frown. He's saying so you look so
angry yesterday through me as you jabbed until you saying you look so angry and you jabbed. मैंने अपने तलवार को तुमने मेरे अंदर ऐसे मारा था, या गन के आगे जो नीप होता है उसे तुमने से जैब किया था, स्टैब किया था. आई पैरिड मींस आई पैरिड मतलब होता है काइंड ऑफ protecting yourself from that attack. So he said I parried but my hands were so loath, so unwilling, so cold, so lifeless. So he's saying तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, मैंने हल्का सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, because he knew he cannot protect for long, so either he has to kill or be killed. So how long can he parry मतलब protect oneself. So he's saying I am the enemy. So narrate, इसमें दो आदमी थे, एक दूसरे को बोल रहा भाई हम ही वो है जिसको तुम सुबह में जब वॉर हो रहा था तुम ही हमको मारे थे. You look so frowning, माने angry. Yesterday when you put that tip of that musket, माने tip of that gun into me, you killed me. But now we do realize that it's useless to fight. We do realize it is no use fighting. We do realize कि हम लोग मारपीट करके कुछ फायदा तो होने वाला नहीं. So he's saying कि let us sleep because अब तो हम लोग देती हैं, so now we are helpless, so we have to sleep forever. So it may be, so this sleep of the two person can be a wake up call for the readers, for people who are reading this poem, that war is destructive and unless it is ended, it will certainly end the human society. So this is how the poem ends, where two friends realize that they have all wasted their life, whether German or English, ultimately human lives are lost. So the message of the poem is the war is very destructive thing, and unless it is ended, it will certainly end the human society. So it's an anti-war poem telling us about the first-hand experience about the war. This poet, Wilfred Woven, himself was a soldier, so his experiences are distilled through war. It is not written from the ivory tower. It is written through the experiences of looking at war firsthand. So thank you for watching the video. And if you have found this video of any help, please do share it with your friends who might need this video. Thank you.